with this. We are in Moscow. Russia आ गया मैं. Once a foolish man quoted, "Don't be fooled around by fear in your mind, be led by dreams in your heart." अब ये सुनकर हमने भी अपनी दिल की सुनी and we decided to take up MBBS abroad. So when I decided to take up MBBS abroad, I went through a lot of exploring. Country, university, language, NMC guidelines, scams and reality. So MBBS abroad comes with a lot of exploration. So I don't know about you, but I do like exploring. So whenever we think about MBBS abroad, there are few countries which symbiotically revolves around it. So today, we're going to explore one such country and one particular university which once was a part of Finland until the end of Winter War. Yes, we are talking about the capital of Republic of Karelia. This video mainly targets students after NEET, but you can enjoy it too. Why not? MBBS abroad and MBBS Russia. Way too complicated, right? So let's make it simple by talking about Petrozavodsk State Medical University. But before that, let me tell you, how did I end up to the northwestern part of Russia, only 300 kilometers away from Europe? Because I am doing my MBBS from Uzbekistan. The thing is, like I said, I decided to explore. And somehow I became a guide for these 4 newly medical students who were starting their journey in Petrozavodsk from Karnataka. Amazing, right? So let's move forward. So being there, first time away from home, yes, there were tears and hugs. So after some deep emotions and happy tears, we start our journey from Bangalore International Airport, Terminal 2. भाई क्या ही airport है. So let's share you my travel journey. So we boarded our flight from Bangalore International Airport, Terminal 2 to Bahrain. So after a 3-hour long flight of Bahrain, we had a 2-hour layover in Bahrain. And then after 2 hours of wait, we fly to our destination, Moscow, the capital of Russia. And from Moscow, we had to travel to Petrozavodsk by road, where university itself sent us the bus. So a 12-hour journey peacefully to Petrozavodsk. I'm sharing you the moments of the journey. Enjoy it, and then we'll talk about the city Petrozavodsk. The name Petrozavodsk comes from Peter. Peter the Great, and Zavod means factory. With the Orthodox Christianity being the majority, the most of the inhabitants are ethnic Russians or Karelians, a finnish Ugric people. But let me tell you one thing. If you want to see that glimpse of Europe in Russia, Petrozavodsk is the place. Because Petrozavodsk as a city is mostly twinned with Alytus in Lithuania, La Rochelle in France, Varkaus in Finland, and Tübingen in Germany. So all these cities are from Europe, and I've also traveled to other parts of Russia, but Petrozavodsk has my heart.
So Petrozavodsk is in the northwestern part of Russia, and its capital, the Republic of Karelia, shares its only international border with Finland. Now, coming back to MBBS in Petrozavodsk State Medical University. Important thing, right? So let's sit and talk. But before telling you about MBBS Abroad, if you have loved this vlog, like it, and probably you have a lot of doubts regarding MBBS Abroad, MBBS Russia, comment down. And if you want to reach out to me, my email is pinned in the description. Email me, and if the request is genuine, I will text you on WhatsApp. I will reply you on WhatsApp. So reaching out to me is very easy, only if you respect your time and respect my time. And also, don't forget to follow me on Instagram. We are soon gonna hit 15k followers on Instagram. So with the population of 5,33,000, the city alone itself holds 2/3 of the population, has a total of 33 hospitals, and coming back to the patient and hospital ratio, every 10,000 patient, there is one hospital. So it's pretty good. You will see a lot number of patients, but let me tell you, it depends totally on the conditions, the weather conditions, the temperature, and diseases are completely different. So you will be seeing a lot number of kids patients rather than adults. This is a reality in Soviet Unions, not only in Russia, it's the same over Central Asia also. So remember this point. Whenever you talk about MBBS abroad, whenever you want to know about MBBS abroad, these 5 questions are must. What are these 5 questions? Education level, clinical exposure, NMC guidelines, the bilingual problem, which most of the universities stuck in it, and the most important is recognitions and verifications of the university. Okay, recognitions is must, which I will answer, and all these 4 questions, who will answer it more better than the seniors of this university itself. So let's take you there and hear it from them. Okay, yeah guys, so I am with Petrozavodsk के senior students. तो आप कौन से ईयर में हो? मैं सेकेंड ईयर में हूँ. मेरा नाम किरण है. Okay, सर मैं थर्ड ईयर में हूँ. मेरा नाम शगुनदीप सिंह. एंड सेकेंड ईयर में अमन है. Okay, so we have Kiran, Shagundip and Aman. Aman from Karnataka. Patala, Punjab. I am from Karnataka. Okay, so we have students. So typically this is gonna be an honest review about the Petrozavodsk State Medical University का. तो studies कैसे है first बताना ये बात. सर बता दो. तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का स्टडी देखो तो प्रॉपर इंग्लिश में है. अगर किसी का डाउट है कि बाइलिंगुअल है, ऐसी बात नहीं है. प्रॉपर इंग्लिश में है. सारे सब्जेक्ट एक प्रॉपर करिकुलम में चल रहे हैं. आपके जो टीचर्स हैं सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यूनिवर्सिटी हर जगह से आपको कोऑपरेशन मिलेगी, हॉस्टल से लेके यूनिवर्सिटी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. तो मुझे ये भी डाउट था कि यहाँ पे कहते हैं कि थर्ड ईयर से बाइलिंगुअल होता है कंप्लीट, तो थर्ड ईयर से नहीं, बस रशियन सिखाई जाती है ना? सर रशियन इसलिए सिखाई जाती है क्योंकि हमने कम्युनिटी में रहना है, तो उसके लिए रशियन की क्लासेस लगती हैं अलग. लाइक हमारी एक वीक में 2 क्लासेस लगती हैं रेगुलर क्लासेस के साथ. उसमें सिर्फ रशियन पढ़ाई जाती है कि आपने यहाँ पे रहना है तो आप एक लैंग्वेज सीख लो. और आपने जैसे हॉस्पिटल में जाना है तो हर बंदे को इंग्लिश नहीं आती, तो आपको कोई दिक्कत ना हो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने में. वैसे रेगुलर पढ़ाई में आपको प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा. So when did the batch start? International batch for Indians in Petrozavodsk? सर इंटरनेशनल बैच पहली बार 2021 में स्टार्ट हुआ था. उससे पहले बाकी देशों के स्टूडेंट थे, लेकिन इंडियंस के लिए 2021 में स्टार्ट हुआ था. और ನೀವು ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅನಾಟಮಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಥೇರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅನಾಟಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅನಾಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. अच्छा, तो और आपके क्लिनिकल्स कैसे होते हैं? डज क्लिनिकल्स सीरियसली होते हैं जैसे पेशेंट्स का क्लिनिकल राउंड? तो आप थर्ड ईयर में हो तो आप अच्छे से बता पाओगे कि कैसे होता है. सर जो क्लिनिकल का हिसाब है, लाइक पहले आपको डमी में करवाया जाता है. फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगाना, अगर मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूं, इंजेक्शन लगाना या ब्लड प्रेशर चेक करना, वो आपको पहले एक डमी में करवाया जाता है. लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद जब आप थोड़ा सा यूज्ड टू होने लगते हो तो आपको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है
एक परफेक्शनिस्ट की एक सुपरविजन में आप एक्चुअल पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. ओके. लेकिन अभी हम जूनियर्स हैं, तो अभी हम अकेले तो नहीं जा सकते, लेकिन एक डॉक्टर के अंडर हम कर सकते हैं. और अमन, यू टेल, हॉस्पिटल्स कैसे हैं? हॉस्पिटल सही है यहाँ पे, मतलब एक्सपोजर है हॉस्पिटल का. जैसे हमें भी सारे जब छुट्टियां हुई ना 2 महीने की, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने को मिला, सब पेशेंट से इंटरेक्ट. और इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स का? हाँ अच्छा है, सही है, बहुत अच्छा. तो अब ये तो सब हो गए एडवांटेजेस. अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है? सच सच बताना, बिल्कुल सच सच, कि डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एनएमसी रेगुलेशन के हिसाब से. एनएमसी रेगुलेशन एनएमसी रेगुलेशन के हिसाब से तो मुझे लगता कोई नहीं है. कुछ नहीं है. पेपर वर्क के हिसाब से तो कोई नहीं है. अगर रहने सहने की बात करो तो थोड़ी मसालों की दिक्कत है, थोड़ा खाने पीने की दिक्कत है. मेस नहीं है यहाँ? मेस नहीं है. ओके. मेस नहीं है यहाँ पे. इंडियन फूड नहीं मिलता, वो आपको खुद कुक करना पड़ेगा. कुकिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. बाकी हॉस्टल में सभी चीजें अवेलेबल है, लेकिन मसालों की दिक्कत है. और यहाँ के लोगों को थोड़ी इंग्लिश कम आती है, तो उसकी लेकिन यूनिवर्सिटी में सबको इंग्लिश प्रॉपर. तो यहाँ पे कैसा है इंटर्नशिप प्रोसेस का? 5 साल के बाद आपको एक इंटर्नशिप देंगे अलग से. कोर्स के अंडर जो इंटर्नशिप होती है वो क्लर्कशिप होती है बेसिकली. तो अलग से इंटर्नशिप होती है या नहीं, ये आपको पता है या नहीं? सर अभी हमारा फर्स्ट बैच ही था. मेरा फर्स्ट बैच था. अभी तक कोई बैच यहाँ पे ग्रेजुएट हुआ नहीं है. लेकिन जैसा बताते हैं कि अब जैसा इंडिया के अकॉर्डिंग होता है, वैसे ही सब कुछ यहाँ पे होता है. लास्ट ईयर में जो 1 साल इंटर्नशिप का होगा, बीच में भी करवाते रहते हैं, लेकिन जो मेन है वो लास्ट ईयर में होता है. और लाइसेंसिंग प्रोसेस का क्या है यहाँ पे, आपको क्या बताया गया है? हमारा अभी कोई बैच यहाँ से ग्रेजुएट नहीं है ना, तो उसके बारे में तो जानकारी नहीं है उसके बारे में. So Petrozova again is a new university. Internship के बारे में तभी पता चलेगा जब बैच आउट पास होगा. Okay, great. Thank you so much. Hi guys, yeah, let me give you a quick review. I would say I am right in front of the theory building, and most of your classes, if you're coming to Petrozova, are gonna happen here. Okay, so I have got to know few things about this university. Ki academics is very strong here. Teachers speak very good English fluently. I have personally spoke to teachers. English is very good, but teachers are very, very strict about the subject. Okay, you have to answer them. You have to study. Actually, you have to study, and yeah, backlogs hoti hain yahan pe, and everything is taken seriously. Okay, so this is a quick review of the Petrozavodsk State Medical University, and also have talked to many seniors here. Every senior tells me that we have to study. We are scared about teachers. There's no corruption at all. There's nothing that can work. There's no partiality between students. So we have to study. Petrozova ka academics tagda hai. So coming to the main point of the video, my review as a medical student, how would I rate Petrozavodsk State Medical University? But consider yourself very lucky to have this video unfiltered, unedited. If I have to describe my video, I would describe candid. This was completely candid because my only intention was to be transparent with you, your parents, and people who are going to choose this university, or students who are going to choose this university for their upcoming 6 years of life. So I wanted to be completely transparent with you. And coming back to my review, the advantages are seniors are very supportive, very cooperative. Even if the batch was started in 2021, the international faculty started in 2021, but still seniors were always there to help juniors. Cultural events are more. Cultural programs, cultural groups are good here. You will see a lot of extracurricular activities here, which university also supports. Third thing, coming to education and English level is pretty good comparing to other universities in Russia. Lastly, clinical exposure and clinical practicals. Clinical practicals, I wanted to also tell you that there are stations assigned for each clinical scenarios. Like pediatrics, there is a station assigned for pediatrics, there is a station assigned for radiology department, dermatology department, and CPR department. So there are stations assigned, and it's similar to what lab 2 exam is. There are also stations where you have to represent yourself as scenarios. Clinical scenarios are taught there, and it's similar to somewhat that clinical exposure. And the last thing, the things which you must be worried about is
seniors are not in the final years. Okay, the one thing which you must be worried about, education is must here. You have to study. Backlogs, you will get backlogs if you don't study. Okay, this is the main thing. And the things you must be worried about is the temperature, since it's in the northwestern part, but it's still comparatively good comparing to other universities like Siberian State Medical University in other part of the Russia, which is dead cold. Okay, so you also must be worried about the temperature. Overall, I feel Petrozavodsk is a good destination. Yes. So I'm now at the Moscow airport and I will tell you why did I start the series. So my goal is simple, that every Indian student going to these universities or MBBS abroad, I'm telling before in hand कि ये university कैसे रहेगी. So that's the goal. Yeah. And also I'll be clear with one thing throughout the series, that in this series I'm not promoting MBBS abroad but actually telling you what MBBS abroad is. Okay, so with this we'll meet you in the bus going to Petrozavodsk.